Good morning, students. Today we are going to do मॉड्यूल नंबर 7. मॉड्यूल 6 हमने पहले ही किया है और अभी हम मॉड्यूल नंबर 7 करने वाले हैं. ओके, मॉड्यूल 6 में व्हाट डिड वी लर्न? वी डिड आर्टिकल्स ए एंड द, राइट. वी सॉल्व्ड इट इन जूम सेशन ऑल्सो और मैंने आपको इमेजेस भी भेजे थे. तो अभी हम मॉड्यूल 7 कर रहे हैं. Module 7. So what is given? Page number 13. Okay. Words for sounds. So in everyday life we hear so many sounds, right? हम बहुत सारे sounds सुनते हैं. Let it be of a birds, let it be of a human, let it be of a things, let it be of a trees. So many things we hear the sounds of, right? तो उस साउंड्स को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ड होता है, उसकी वोकैबुलरी क्या है, वो हम इस मॉड्यूल 7 में पढ़ने वाले हैं और लर्न करने वाले हैं. ऑलराइट. वर्ड्स फॉर साउंड्स. इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन योर क्लासरूम. स्कूल इज अबाउट टू गेट ओवर. यू हियर द साउंड ऑफ द स्कूल बेल एंड यू रश आउट. What is the sound that the bell makes? A bell rings. So जो बेल होती है स्कूल के बाद में, तो उसका साउंड कैसे होता है, राइट? इट इज लाइक की टंग 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 टंग, राइट? सो दैट वी कॉल बेल रिंग्स. A sound is something you can hear. There are many sounds made by people, animals and things. So there are so many sounds, which are made by animals, peoples and things. Animal, people and things. Okay. Examples, coins jingle, right? जैसे coins की भी आवाज को क्या बोलते हैं? Jingle, right? So depending on this we are going to solve exercise 2.1. You can see on the screen. Look at the question. Color the boxes with the sounds that matches the given पिक्चर्स. 1 is done for you. हमने ये क्वेश्चंस अभी ऑनलाइन जूम सेशन में किया. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास. ओनली आई गेस अवनी, देन संग्राम एंड सुखदा, दे वर देयर. सो हियर you watch this video. I'll be sending you the image also and then try to understand. Man sleeping. जब हम सोते हैं तो कैसी आवाज आती है? त्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो? घोरणे, बरोबर. सो दैट इज स्नोर. सो जो आंसर है 3 ऑप्शंस में से, उसमें से स्नोर को उन्होंने कलर किया है. सो स्नोरिंग मीन्स व्हाट? घोरणे. व्हेन वी स्लीप व्हाट काइंड ऑफ अ साउंड वी मेक? कैसे आवाज आता है? दैट इज स्नोरिंग. ओके. देन टर्न द पेज. पेज नंबर 14. टॉकिंग सॉफ्टली. अगर हम किसी के कान में और बहुत स्लोली बात कर रहे हैं त्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो? पुटपुटणे, राइट? सो दैट इज विस्पर. विस्पर मीन्स पुटपुटणे, कानात बोलणे, हळूच बोलणे, राइट? विस्पर. कुजबुजणे. The proper word in Marathi is kuzbuzne, right? That is whisper. You can see in the picture. He is telling something to her very softly, very slowly, right? Then blowing a whistle. So whisper को यहाँ पे टिक करना है. All right? Then blowing a whistle. इसके फोटो मैं भेज दूंगा आपको आंसर्स के साथ. Blowing a whistle. अगर हम whistle blow करते तो कैसी आवाज आती है? टूट टूट, like that. Dog smelling. जब when dog breathes or when it smells, so what kind of noise come? It sniff. Sniff. When we bring our hands together, clap, right? Clap. Water dripping from a tap. This one you have to solve. इसका आंसर तो मैं गूगल क्लासरूम में इस वीडियो के साथ में भेज दूंगा, इमेजेस के साथ में, राइट? एंड एक्सरसाइज 2.2 ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व. इट्स क्वाइट इजी. एक उन्होंने सॉल्व करके दिया है, राइट? यस.
So you will get the video on Google Classroom and the answers of these questions. Thank you.